BBCR. Full name of the repertory is Boger-Boenninghausen Characteristics and Repertory. Author is Dr. Boger. Publication year with edition. First edition 1905 by Borick and Tafel. Second edition 1937 by Roy and Co. under assistance of his wife. Introduction. In his time, both the Boenninghausen and Kantian schools were popular. Boger made a study of both but accepted Boenninghausen's study of working out of a case. डॉक्टर बोगर के टाइम पे बोनिंगहुसेन और केंट दोनों के स्कूल पॉपुलर थे और उनके फ़िलोसॉफीज़। बोगर ने दोनों को स्टडी किया बट उसने डॉक्टर बोनिंगहुसेन की वे ऑफ वर्किंग आउट ऑफ केस को एक्सेप्ट किया। उन्होंने ढूंढा कि प्रैक्टिशनर्स को जो एग्जिस्टिंग फॉल्टी ट्रांसलेशंस थे रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज़ के, उसके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था। इसलिए उन्होंने वो जो टास्क था उसको रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज़ को ट्रांसलेट करने का उसको अपने हाथों में लिया इन 1900। बोगर ये भी जानता था कि प्रैक्टिशनर्स को क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है थेरेपेटिक पॉकेट बुक यूज़ करते टाइम, एज़ वेल एज़ क्रिटिसिज्म जो उसके ख़िलाफ़ उसके प्रिंसिपल्स और मेथोडोलॉजी के ख़िलाफ़ आए थे, उसके बारे में भी बोगर को पता था। ओके, he find that practitioners had to depend on existing faulty translations of repertory of antisoric remedies. He embarked upon the task of translating it in 1900. Boger was also aware of the difficulties faced by the practitioners while using the therapeutic pocketbook, as well as criticism leveled against its principles and methodology. Boger also undertook the major work of rewriting Boenninghausen's repertory. This he did by adding aggravations, ameliorations and concomitants in a detailed manner at the end of every chapter. बोगर ने जो बोनिंगहुसेन की रेपर्टरी थी उसको भी फिर से रीराइट करने का काम अपने हाथों में लिया। उसने ये किया बाय एडिंग एग्रेवेशन, एम्यूलरेशन और कंकॉमिटेंट डिटेल मैनर में हर एक चैप्टर के एंड में। The outcome was a more useful work enriched with many new chapters, new rubrics and medicines. जो outcome आया वो था कि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने लगा। उसमें बहुत ज़्यादा न्यू चैप्टर्स थे, न्यू रूब्रिक्स थे और मेडिसिन्स भी थे न्यू। टोटल नंबर ऑफ़ मेडिसिन जो इस रेपर्टरी में यूज़ किए वो है 464। इट वॉज पब्लिश बाय बोरिक एंड टेफल इन 1905। यहाँ पे जो हमने लिखा है ना पब्लिशिंग ईयर, फर्स्ट एडिशन 1905 बोरिक एंड टेफल, ये इसी का है। सेकेंड एडिशन रॉय एंड को ने इंडिया में इन 1937 अंडर द असिस्टेंस ऑफ बोगर्स वाइफ। ओके, दिस एडिशन proved very useful in successfully working out केसेस को वर्कआउट करने के लिए ये वाला एडिशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। इसमें मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे फर्स्ट पार्ट में और रेपर्टरी प्रॉपर था सेकंड पार्ट में। BBCR में फर्स्ट पार्ट में है मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड पार्ट में है रेपर्टरी प्रॉपर। हेंस टाइटल दिया है बोनिंगहुसेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेपर्टरी। सोर्स बुक्स BBCR के है Boenninghausen's therapeutic pocketbook, soric and antisoric repertories, Boenninghausen's sides of body, therapeutics of intermittent fever, therapeutics of whooping cough, aphorisms of Hippocrates. Philosophical background. BBCR is based on inductive logic, that is from particular to general. Boger's work, Boenninghausen's characteristics and repertory, is based on the following fundamental concepts: doctrine of complete symptom and concomitant, doctrine of pathological general, doctrine of causation and time, clinical rubrics, evaluation of remedies, fever totality, concordances। ये जो 7 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है इसके ऊपर BBCR बनी है। ओके, और 7 फंडामेंटल कौन से हैं? 3 डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम्स एंड कॉन्कॉमिटेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉजेशन एंड टाइम, क्लिनिकल रूब्रिक्स,
evaluation of remedies, fever totality, concordances and relationship of remedies. इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे? 3 डॉक्ट्रिन CPC वाले, कंप्लीट सिम्टम, पैथोलॉजिकल जनरल एंड पोजीशन एंड टाइम. Then clinical rubrics and evaluation of remedies, fever totality, concordances and relationship of remedies. So first one is doctrine of complete symptoms and concomitants. कंप्लीट सिम्टम वो होता है जिसमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ रहते हैं. कंप्लीट सिम्टम्स आर वेल अरेंज्ड एंड नेसेसरी टू डू ग्रैंड जनरलाइजेशन रिगार्डिंग सेंसेशन एंड मोडालिटीज़. ये जो ग्रैंड जनरलाइजेशन है वो हमने थेरेपेटिक पॉकेट बुक में पढ़ेंगे. ओके, कंप्लीट सिम्टम वो होते हैं जिसमें लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ रहते हैं. कंप्लीट सिम्टम्स वेल अरेंज रहते हैं और ग्रैंड जनरलाइजेशन के लिए नेसेसरी रहते हैं सेंसेशन एंड मोडालिटीज़ के रिगार्डिंग. कॉन्कॉमिटेंट्स भी दिए रहते हैं. कॉन्कॉमिटेंट्स को ग्रेटर इम्पोर्टेंस दिया रहता है बोगर ने इन रिलेशन टू द पार्ट्स. Doctrine of pathological generals. Boger was not satisfied by merely following the principle of complete symptoms, but he went further to seek general changes in tissues and parts of the body. Pathological generals tell the state of the whole body and its changes in relation to the constitution. They help us to concentrate on more concrete changes to select the simillimum. The chapter Sensation and Complaints in General is full of examples of pathological generals which include discharges, structural alterations, constitutions, diathesis, etc. Doctrine of Causation and Time. Boger has given an adequate place and importance to causation and time of expression. Each chapter in the book is followed by time aggravation. The section on aggravation also contains many causative factors. From his point of view, causation and time factors are more definite and reliable in cases as well as in medicine. These causative and time factors are very useful for finding out simillimum in shortest possible time. Clinical rubrics. They help the physician in cases of advanced pathology, that is gross tissue changes, where he is left without a clear picture because of poor susceptibility. These rubrics are useful to arrive at a group of medicine which can be further narrowed down with the help of modalities and concomitants to select finally the most similar remedy. Evaluation of remedies. Boger introduced the grading of symptoms into 5 ranks by the use of different typography such as capital 5, bold 4, italic 3, Roman 2, Roman in parentheses 1. Fever totality. This is a unique contribution of Boger. The arrangement of the chapter on fever is self-explanatory. Each stage of fever is followed by time, aggravation, amelioration and concomitant. फीवर के हर एक स्टेज के बाद टाइम दिया है, एग्रेवेशन दिया है, एमेलियोरेशन दिया है, कंकॉमिटेंट दिया है. नाउ कॉन्कॉर्डेंसेस. कॉन्कॉर्डेंस पे एक चैप्टर दिया है बोगर ने. उसने फ़िलोसॉफी को क्लियर किया है और प्रैक्टिकल किया है. दो इट डील्स विद रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ ऑफ ओनली 125 रेमेडीज़. ये कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर में सिर्फ 125 रेमेडीज़ के रिलेशनशिप दिए हैं, पर वो उसने फ़िलोसॉफी को क्लियर किया और प्रैक्टिकल भी किया. नाउ प्लान एंड कंस्ट्रक्शन. डे टू डे यूज़ जो था थेरेपेटिक पॉकेट बुक का, उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आ रहे थे, इसलिए बोगर ने इसे उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की कोशिश की और उस बुक के कंटेंट को भी, बाय एडिंग मैनी मेडिसिन्स एंड रूब्रिक्स. उसके खुद के एक्सपीरियंसेस और अदर सोर्सेज से लेकर उसने मेडिसिन और रूब्रिक्स ऐड किए TPB में. इसलिए ये बुक बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी उसमें, पर उसमें जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज नहीं हुए हैं. हम लोग ने ये रेपर्टरी कंपाइल करते टाइम बोगर ने बेसिक प्लान एंड कंस्ट्रक्शन फॉलो किया था बोनिंगहाउसेन की रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन का, which could overcome many difficulties faced in using therapeutic pocket book. Unlike Boenninghausen, he made several sections for different parts of the body and he added many rubrics and sub-rubrics. The chapter on fever has been entirely changed in its arrangements as well as in its contents for easy reference. अभी ये थेरेपेटिक पॉकेट बुक का ही मॉडिफिकेशन है, इसलिए इसमें
सेम पार्ट्स रहेंगे बट और ज़्यादा पार्ट्स ऐड किए हैं और ज़्यादा रूब्रिक्स ऐड किया और ज़्यादा सब रूब्रिक्स भी ऐड किए। उसने सेम ग्रेडेशन फॉलो किया है एज ऑफ TPB एज दैट ऑफ बोनिंग-हुसैन। ये BBCR में 53 चैप्टर्स है और ये चैप्टर्स फर्दर सब डिवाइड भी हुए हैं। द चैप्टर्स आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट, माइंड, सेंसोरियम, वर्टिगो। माइंड, सेंसोरियम, वर्टिगो। हेड, eyes, ears, nose, face. Teeth, mouth, appetite, thirst, taste, eructation, water brash, heartburn, hiccough, nausea and vomiting, stomach, epigastrium, hypochondria. Abdomen, external abdomen, inguinal and pubic region, flatulence, stool, anus and rectum, perineum, prostate gland, urine, urinary organs, genitalia, sexual impulse, menstruation, respiration, cough, larynx and trachea, voice and speech, neck and external throat, chest and back, upper extremities, lower extremities, sensation and complaints in general, glands, bones, skin and exterior body, sleep, dreams, fever, compound fevers, condition in general, condition of aggravation and amelioration in general, concordances. Here are 53 chapters in BBCR. Now, arrangement of rubrics. Most of the section in the book starts with the rubric in general. बहुत सारे sections in general rubric से start होते हैं. ये rubric groups करता है prominent medicines को, which are capable of producing different types of symptoms in relation to that organ or location. Location rubrics are followed by subdivision of parts, with each part having rubrics like side and extending to. After the location, different sensations are arranged in an alphabetical order. Each sensation is a general rubric, which is followed by a group of medicines. Sensation is divided into sub-rubrics under which parts are mentioned. Usually, these sub-rubrics are too specific and have a less number of medicines. Thus, these sub-rubrics are less useful in repertorization. The rubrics for location and sensation are mixed and there are no separate heading given for them. But it is easy to understand because there is an order, that is, location के बाद sensation आते हैं alphabetical order में. This is followed by time aggravation, amelioration, concomitant, cross-reference. Now, methods of repertorization. Method entirely based है on the availability of data in a case. The केस में क्या क्या डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मेथड बेस्ड है. फर्स्ट है यूजिंग कॉजेटिव मोडालिटीज़ इन द फर्स्ट प्लेस. यूजफुल इफ़ द केस हैज़ डेफिनाइट कॉजेटिव मोडालिटीज़. अगर कॉजेटिव मोडालिटी मतलब किस चीज़ की वजह से हुआ है ये अगर अच्छे से पता होगा केस में, तो हम लोग कॉजेटिव मोडालिटीज़ के मेथड से कर सकते हैं केस सॉल्व, रेपर्टाइज. Causative modalities, aggravation, mental and physical, amelioration, mental and physical generals, concomitants, location and sensation. इस मेथड में अगर यूजिंग मोडालिटीज़ इन द फर्स्ट प्लेस, अगर कॉजेटिव मोडालिटीज़ एब्सेंट होंगे तो मोडालिटीज़ यूज़ करेंगे. मोडालिटीज़ मेंटल एंड फिजिकल, concomitants, physical general, location and sensation. Using concomitants in the first place. If clear concomitants are available without modalities, concomitants, modalities, physical general, location, sensation. Using pathological general. Useful if the changes in tissues are at different location in a person. Pathological general, physical general, concomitant modalities. Using diagnostic rubric. Helps mainly in finding out a palliative drug when the case lacks in characteristic expressions. Clinical rubrics, aggravation, amelioration, weak concomitant, physical general. Following Roberts BTPB method, location and sensation, modality, concomitant, physical generals. Fever totality. In a fever case, if the stages are distinct, the following order would be preferable if the same stage is not available in the case. Only the next stage should be used for repertorization. Chill, heat or sweat. Type, time, aggravation, amelioration, concomitant. Use of concordance chapter. This chapter deals with the relationship of remedies. Advantage, complete symptoms is equal to more useful in acute and short cases.
Diagnostic rubrics. We find many diagnostic clinical rubrics mentioned in each chapter with a group of medicine. It is useful in a majority of cases. Pathological generals. This repertory contains many pathological generals which are valuable for repertorization and selecting a minimum. Rubric. Infant affections of. This is a big rubric with many sub-rubric in the chapter. Sensation and complaints in general. This is unique and very useful in pediatric practice. Constitution. Different types of constitutions with a group of medicines available in the chapter. Sensation in general. Concomitants in general. Separate concomitants. This chapter follows modalities in most of the locations. Boger made it more useful for the practice by attaching concomitants to the parts. Fever chapter. This is one of the best repertories for fever cases. Cross-reference. This subsection is given at the end of the chapters, which helps us to find appropriate rubric. Mind section. This repertory begins with a large mind section. Menstruation chapter. This is well arranged and followed by concomitants in the following order: before menses, at the start of menses, during menses, after menses. Disadvantages. Chapter of concordances contain only 125 remedies. Mind chapter is enriched with many rubrics, sub-rubric. Last section of cross-reference with the concomitant subsection of mind does not help practitioners as it contains only a group of medicine. Concomitant subsection is absent and concomitants are mentioned under the heading of aggravation. There are 53 chapters in repertory and a definite order is not followed. A definite order of arrangement is not found in the repertory, thus the practitioner finds it difficult to search for a rubric. Boger has used similar rubrics in different sections, which creates confusion for beginners. Several rubrics are not given at a proper place, thus creating a difficulty in finding them. Many rubrics have only a single or few medicine. Rubrics do not contain a larger group of medicine. Some information which is available in this synoptic key is not found in the repertory. Nosoots are not represented well. BBCR parts, prefix part, repertory part, suffix part. Prefix part. Acknowledgement forward written by H. Robert. Introduction to BBCR. Historical sketch of Boger-Boenninghausen. Introduction to MM parts. Contents of MM drugs. Repertory part. Preface popper on the use of repertories, repetition of doses, homeopathic prognosis, different edition, list of remedies with abbreviations, text proper, word index, suffix part, concordance part.